Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. I am your English teacher, Mr. Haroon Shahzad. तो अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ. पैराग्राफ नंबर 2. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. Keep in mind, ये एक important paragraph है according to board pattern. तो आपने इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझना है. पहले हम इस पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंथ, ताकत, पावर. इंटरेस्ट, मुफाद, फ़ायदा. बेनिफिट, सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी यानी कि इक़्तिदार आला, सबसे सुप्रीम पावर जो होती है. इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी, सालमियत, वकार. हॉलनेस, सुप्रीम, आला तरीन, हाईएस्ट रैंकिंग. कॉम्प्रोमाइज, समझौता, एग्रीमेंट. प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्शन, हिफाजत, डिफेंस. एंड द लास्ट वर्ड इज courage, जुरत, ब्रेवरी. अब हम इस पैराग्राफ के बामुहावरा ट्रांसलेशन करते हैं. द फर्स्ट लाइन इज पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल. हुब्बुल वतनी लोगों को देती है. क्या चीज़ देती है? द स्ट्रेंथ एंड करेज, कुव्वत और हिम्मत यानी कि ताकत और हौसला देती है. टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए. ऑफ द कंट्री एंड नेशन, मुल्क और कौम के. पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन. हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुव्वत और हिम्मत अता करती है. The next line is for a patriot, एक मुहिब्बे वतन के लिए. The sovereignty, integrity and honor of the country, मुल्क का वकार, खुद मुख्तारी और सालमियत. sovereignty कहते हैं खुद मुख्तारी, इक़्तिदार आला. integrity कहते हैं सालमियत और honor का मतलब इज़्ज़त, वकार. are of supreme values, वो आला कदरें हैं. ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. फॉर अ पैट्रियट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड. एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क का वकार, खुद मुख्तारी और सालमियत वो आला कदरें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता. द लास्ट लाइन इज पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस, मुहिब्बे वतन कुर्बानी देते हैं. फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए. किस चीज़ की हिफाजत के लिए? ऑफ दीज वैल्यूज़, इन अक़दार की. कौन सी इक़दार? वही खुद मुख्तारी, सालमियत और इज़्ज़त. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. मुहिब्बे वतन इन अक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कुर्बानी देते हैं. तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है. अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश करते हैं. फर्स्ट लाइन है Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. तो इसको हम सिंपल इंग्लिश में यूं कन्वर्ट करेंगे, द पैट्रियोटिज्म
makes people powerful and bold to save the benefits of their country and nation. The next line is, for a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, a patriot does not compromise on the supreme power, honor, and respect of his country at any cost. The last line is, patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. The patriots give sacrifice to save and preserve all these values. यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2 भी कंप्लीट होता है